evening, ladies and gentlemen. As Prime Minister Modi took off on a 3-day state visit to the United States, hopes of an entire nation looking to find its place in the global world order also took off. While India is the fastest growing economy in the world with rapid gains made on most developmental goals, the nation is yet to reach its promised potential as a global powerhouse, with scale and technology being its biggest challenges in achieving fully developed status. This is why this 3-day visit to the United States is not just a recognition of India's rise as a peaceful democratic power, but also an opportunity to seal crucial deals that will help it modernize and become Atmanirbhar at a faster clip. It will also help her bridge key technological gaps to safeguard its borders from terror sponsors and expansionist powers. However, when the Prime Minister Modi lands in America, he will not be seen as a man in need for US assistance, but a man who can meet the US President as his equal. He will rub shoulders with the leaders from the world's biggest superpower as an emerging superpower of his own, with a lot to offer in return. Viewers, that is why Biden is pulling out all stops to showcase US recognition for the defining relationship of the current century. It is a moment poignant with hope and pride. Yet, there are some that are invested in undermining the India story. While Pakistan's ISI has launched a sly propaganda to discredit Prime Minister Modi, the opposition parties in India too are refusing to unite behind its leader, who is shining on the world stage in the light of India's glory. Listen in to what Uddhav Thackeray's Member of Parliament, Sanjay Raut, had to say. और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है। प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं यूरो में, अमेरिका में, तो मैं उनको भी कहूँगा, जैसे योगा डे के लिए आपने एक वहाँ काम किया है योगा डे घोषित करने के लिए, वैसे वर्ल्ड ट्रेड डे को भी आप घोषित करने के लिए यूरो को बताइए, बोलिए हमारे देश में कैसी कैसी गद्दारी चल रही है. Even as the opposition continues to criticize Prime Minister Modi's visit, Samajwadi Party Member of Parliament Shafiqur Rahman today opposed celebrating Yoga Divas in madrasas, saying instead of Yoga Divas, Talim Divas should be celebrated in madrasas because yoga only harasses those in madrasas. Listen it. मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं. मदरसों में तालीम के लिए बनाइए, मदरसों में तालीम की बस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है. तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस बनाना चाहिए. योग दिवस से क्या मतलब है? तो योग दिवस को कैसा मानते हैं? मतलब अभी योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज तो है. आदमी अपने घर भी योग कर सकता. अरे ये मदरसों में हैरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें. तो ये इनका एक ही मंशा है. Not just these two political parties, the Congress also put out a tweet saying that bye-bye Manipur, hi America, clearly doing politics of the internal crisis in Manipur and saying that the Prime Minister should have paid attention to that before he left for the US. And that is the Congress's latest take. Let's also now listen in to the BJP, which has hit back at the opposition, accusing it of trying to malign Bharat's image on the world stage. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारत की साख बनी है, जो आज भारत के ऊपर विश्वास है पूरे विश्व का, उसका एक प्रमाण ये भी है कि वो सभी आर्थिक संबंध भारत के साथ बड़े रूप में बढ़ाना चाहते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुबह ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए निकले हैं, प्रस्थान किया है उन्होंने,
और आप सब जानते हैं कितना अहम ये स्टेट विजिट माननीय प्रधानमंत्री जी का रहने वाला है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ बहुत उत्साह और अपेक्षा के साथ देख रहा है। The Congress party and some of these foreign forces are aligning to dislodge a democratically elected government in India. देखिए, आज देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। संसार के अंदर, विश्व के अंदर जिस प्रकार से अनेकों समस्या है, चाहे बॉर्डर की समस्या रही हो, चाहे पानी की या पर्यावरण की, पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देखता है। और आज सही बात है कि अगर कोई शांति देश विश्व के अंदर ला सकता है तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व ही ला सकता है। Meanwhile, as Prime Minister Modi is expected to land in New York tonight, my colleague Sushant Sinha brings this ground report from Times Square. His state visit in America is going to be a historic one. Not because it is important for India, but it is more important for America, which is struggling to revive from what happened here after COVID pandemic and what happened during Russia-Ukraine war. And if you talk about America, they are looking more eagerly to welcome Narendra Modi in Washington as well and sign some deals which are going to be a game changer, not for India but for America as well. And if you see, मैं इस वक्त यहाँ टाइम स्क्वायर पर हूँ और यहाँ पर सारी जगमगाहट जो है, लाइट्स हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं, सब कुछ है, लोगों की भीड़ है। लेकिन अमेरिका में ये जो जगह चमचमा रही है, वो चमचमाहट अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में नहीं है। और इसीलिए महंगाई यहाँ पर बहुत है, बैंक्स बंद हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और जो बाइडेन प्रशासन जो है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कैसे इंडिया के साथ, जो दुनिया में ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, इंडिया विच इज लीडिंग द वर्ल्ड, should also collaborate with America, which will bring jobs here, which will help in easing inflation, which will help Joe Biden government, making sure that people see them as they delivered what they promised. And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question on the Newshour tonight. India shines, critics isolated? That's the question and that's the debate.